एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल्स ऑफ जम्मू रीजन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद एजुकेशन प्रोसेस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूल स्टूडेंट्स को विशेष धन्यवाद दिया है। घातक कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के भविष्य के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल ऑफ जम्मू रीजन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निवासियों को सुरक्षित रखने और महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त किया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्राइवेट स्कूलों का मंथली ट्यूशन फीस एकत्रित करने की इजाजत देने और संकट के समय व्यवहारिकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर समून और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का आभार व्यक्त किया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी ऑर्डर EDU 100 के मद्देनजर कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जम्मू संभाग के सीबीएसई स्कूल पिछले वर्षों के रेट के मुताबिक ही फीस लेंगे और 2020-2021 सेशन के लिए फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। फीस मासिक आधार पर ली जाएगी। हालांकि यदि कोई पेरेंट फीस 3 माह, 6 माह या सालाना आधार पर देना चाहे तो दे सकता है। सभी स्कूल लॉकडाउन की अवधि के लिए किसी प्रकार की एनुअल फीस और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेंगे। सभी स्कूलों के फी पोर्टल 14 मई 2020 से शुरू हो जाएंगे और पेरेंट्स को इस संबंध में मैसेज भेजे जाएंगे। ये भी तय किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान टीचर्स के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और इनमें और सुधार किया जाएगा। I am Pramod Kumar Srivastava, Principal, Model Academy and President, Jammu Sahodaya School Complex, Jammu. I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Asghar Hassan Samoon, IAS, Principal Secretary School Education, for his kind attention towards the CBSE school. Sir, your kind gesture by giving us permission to charge tuition fee, it is indeed a very good relief in this pandemic situation. Our teachers are working tirelessly 24/7 to conduct the online classes for the students. Though all the schools are giving their best to provide the online classes to the students of the Jammu and Kashmir, and at the same time they are also in need of the money, which is a very essential requirement for these working people out here in Jammu. So your kind gesture and your kind support in this regard is highly appreciated, and we, the teachers, the educational fraternity, would like to extend once again a very warm thanks and regards. Thank you so much. Blissful greetings to all. On behalf of all the edu leaders and the entire teaching fraternity, I, Dr. Vikesh Kaur, Principal, Doon International School, Jammu, extend my heartfelt gratification and sincere thanks to the Honorable Principal Secretary of J&K, Dr. Asghar Hassan Samoon, IAS, for supporting the noble cause of education through extending an appreciational encouragement to the honest endeavors of all the teachers who are working tirelessly 24/7 to meet up the challenges in these unprecedented times. Sir, we are highly grateful to your kind self because your decision of permitting private schools to charge tuition fee has been exemplary in these trying and testing times, which is apparently going to help private schools in paying salaries to the teaching fraternity who have miraculously emerged as the true COVID warriors with their remarkable contribution in not letting the education sector stand still even in these pandemic lockdown times. Thank you so much. On behalf of Educational Fraternity, I, Randeep Wazir, Principal, International Delhi Public School, Jammu, would like to extend my warm thanks to Mr. Asghar Hassan Samoon, Principal Secretary School Education, for providing staunch support to all the educators of this region. We are overwhelmed by your tweet where you've supported the teachers who are shaping the world and providing necessary encouragement during this difficult time. Your decision to promote schools to charge tuition fee was worth appreciating,
and is applauded by all the teaching fraternity who are actually working as COVID warriors during this time. Thank you so much. A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।